Welcome back to the channel of Chem Pacific. In this video, I'm going to discuss with you some important topics, that is electronic effect and also steric effect from the chapter Organometallics. Now, before we get started, if you're new to our channel, don't forget to subscribe on the channel and press the bell icon. And also, if you like your video, do press the like button. Now, let's get started. Now, this is very important topic which I believe has to be discussed in detail so that students should have a clear picture about it. Now, actually, what happens, there are two factors, that is the steric effect and also the electronic effect, which determines what kind of atoms are going to be coordinated to the metal which is trans to a pi accepting ligand. Okay, now this is very important, and two factors actually come into play, that is the electronic effect and steric effect. Let me explain this thing to you in detail. That is, you must remember that stable complex कैसे बनते हैं. What do you mean by the stable complex? Now this is very important. Stable complex कब बनते हैं और कैसे बनते हैं? When you say that a complex is stable, when you say that a complex is stable, complex, and what do you mean by it? It means a stable complex. In a stable complex, you must remember that all the bonds must be stronger. Then only that leads to the formation of a stable complex. जब सारे के सारे bonds strong हो जाते हैं. Now what happens in a stable complex? अगर कोई भी sigma donor pi acceptor ligand है, for a ligand which is a sigma donor and also a pi acceptor, for a complex which is a sigma donor and a pi acceptor, it always prefers, this is very important, it always prefers a this is very important, it always prefers a non-pi acceptor ligand trans to it. ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा. तो let me recapitulate. तो it means that अगर हम electronic, this is I'm talking about the electronic effect. ठीक है? First we will discuss about the electronic effect and then the steric effect. In the absence of steric effect, electronic effect comes to play. This is very important. It is very important for me to mention that जब steric effect नहीं है, when the ligands are not chelating ligands, so तब आपका electronic effect play करते हैं. So electronic effect का most important है कि steric effect should not come into existence. Mainly when the steric effect comes into play, when the ligands are chelating in nature. We are definitely soon going to discuss about it. तो जब steric effect आपका play नहीं कर रहे, तब हम importance देते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को. तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वही कहते हैं दैट अगर कोई स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, उसके सारे जो बॉन्ड्स है दे मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ये कहते हैं अगर कोई सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगैंड है तो उसके ऑपोजिट में वो हमेशा प्रेफर करते हैं कोई भी this is very important, non-pi acceptor ligand trans to this. Basically, कोई भी system में या also in your life also, competition that leads to instability. आपके कोई भी चीज में competition नहीं होना चाहिए. That competition, always remember, when you have, when anything needs to compete, so competition will result in instability. This is very important. Competition will always result to instability. मतलब अगर कोई सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगैंड है, उसके ऑपोजिट में वो नहीं चाहते कि दूसरा सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगैंड हो. ठीक है, वो हमेशा वही कोशिश करेंगे दैट वही स्टेबिलाइजेशन में रिजल्ट करेंगे अगर कोई सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टिंग के लिगैंड के ऑपोजिट या ट्रांसपोजिशन में नॉन पाई एक्सेप्टर लिगैंड एग्जिस्ट होगा, तो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स.
In order to explain this in detail, I have taken two examples to explain you. Now, I have taken two stable complexes, this as well as this, and both of them I am considering one ambidented ligand, where you have SCN minus, where you have the sulfur and nitrogen which can act as a donor. But यहाँ पे दो चीज we must consider, take into consideration. It is very important. With two things we must keep it in your mind. वो ये है that what is the nature of the sulfur? What is the nature of the sulfur atom? You must always remember sulfur जो है it is big in size. ठीक है, it is large or big in size. This is also very important, and also sulfur is a sigma donor and pi acceptor ligand. Pi acceptor ligand. This is very important. And in the case of in this ligand, then you have the nitrogen atom. So you must keep it in your mind that nitrogen is definitely small in size as compared to sulfur, is smaller in size, and this is only a sigma donor ligand. Or also you can say this is a very important non-pi acceptor ligand. ठीक है? Now, as I already mentioned you that कोई भी sigma donor pi acceptor ligand अगर present है, उसके opposite में आपको non pi acceptor ligand होता है. That complex is a stable complex. So, I have taken one example. वहाँ पे हमने देखा when this ligand is ammonia, ठीक है, which is a non pi acceptor ligand. Okay, so वहाँ पे क्या हो रहा था? In the case of SCN ambidented ligand, the sulfur atom gets coordinated to the metal. ठीक है, because this nitrogen has nothing to do with the pi bonding with the metal. Now that is why in the SCN, this sulfur atom will result in stronger pi bond formation. ठीक है, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. अगर कोई भी लिगैंड ले रहे हो NH3, देन अगर SCN माइनस अगर आपका ऐसे एक एम्बिडेंटेड लिगैंड है, देन सल्फर would love to get coordinated to the metal, because in this case sulfur face no competition with the ligand which is present to its opposite or trans to it. समझ में आया? So that results in no competition and that results to a stable complex. So in this case we have the complex 1, a stable complex. Okay, now let us move on to the next example. यहाँ पे क्या हो रहा है? Also I have given in a very detailed form जो भी मैंने explain किया है. देखो in case 1 जो मैंने इसके बारे में अभी explain किया है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही किया. As because nitrogen ये pi bond formation नहीं कर सकता. This is a sigma donor ligand. So that is why sulfur, it actually results in the pi bond formation with the metal. Why? Because it has empty d orbital. That is why it results in the pi back bonding with the metal. So as a result of this pi back bonding, from the metal to the sulfur atom to the vacant d orbital of the sulfur atom, this result in a very strong bond formation. A sulfur would definitely love to get, in that case sulfur would definitely love to get coordinated with the metal, क्योंकि सल्फर के साथ अभी कोई competition में नहीं है. So in that case, जब SCN इस type of ambidented ligand हम लेते हैं, then the sulfur atom loves to get coordinated to the metal जब आपके metal के transposition में ammonia होता है. Now, अगर मैं case 2 लेती हूँ, what will happen that if we replace ammonia by a sigma donor pi acceptor ligand. Now, this nature PPH3, you must be knowing that this is a sigma donor and pi acceptor ligand. Very interestingly, अगर ऐसा होगा तो उस टाइम क्या होगा, ये हमेशा प्रेफर करेंगे that इसके ट्रांसपोजिशन में that nitrogen should get bonded to the platinum trans to it, which is non-pi acceptor ligand, ताकि कोई भी competition ना हो. So less the competition,
more is the stability. This is very interesting and important, and this factor is known as electronic effect. So in this case, and अगर ऐसा होता है, then we say that this complex is also again a stable complex. I hope this is very much clear to all of you. ठीक है, this will a stable complex. So this is also I've given in a very beautiful note form. And in this case, what is happening? The phosphorus atom, if we replace ammonia by a sigma donor pi acceptor ligand like PR3, then this in this case of the phosphine, the phosphorus atom के पास है empty d orbital which acts as a pi acceptor ligand. So it can accept the electron cloud density from the metal. Okay, as a result of which क्या होता है, this is a better pi acceptor ligand as compared, this is a better pi acceptor ligand as compared to the sulfur. तो फिर क्या होगा, तो सल्फर अगर आ जाएंगे तो सल्फर से कंपटीशन में आ जाएंगे, that results to instability. That is why यहाँ पे जब PR3 ठीक है कोई भी फॉस्फेन हो जाते हैं तो उसके ट्रांसपोजिशन में कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कंपटीशन हो जाएगा. आई ऑलरेडी मेंशन द प्रेजेंस of the pi bonding ligand in the transposition results in competition which decreases the stability of the complex. Very important. ठीक है, so that is why in that case अगर कोई भी sigma donor pi acceptor ligand होगा, in that case the ambient with the ambidented ligand, the nitrogen atom actually prefers to get bonded to a position trans to the phosphorus atom, and this phenomena is defined as the trans effect and also the electronic effect. Now electronic effect comes into play when steric effect is not present. So अब हम पढ़ाई करेंगे steric effect का मतलब क्या है. Very important. Steric effect तभी होता है जब आपका the ligands जो है वो chelating ligands होते हैं और वो हो जाता है bulky groups. तो जब steric effect comes into play when the ligands are mostly the chelating ligands and results in the bulky group. So this is very important. So due to the presence of the chelating ligand, the steric effect dominates and the electronic factor is not concluded. Very important. So when this kind of ligands, what kind of ligands are we using? The ligand should be bulky and chelating. Now let me note it and jot it down. I'm talking about when the ligands are chelating ligands. Chelating ligands, it means actually when the ligands are actually bulky in nature. When the ligands are chelating ligand, this chelating, due to the presence of the chelating ligands, steric effect comes into play. And in that case, this comes into play, and in that case, the electronic factor is not concluded. Keep it in your mind. तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप बहुत ध्यान से देखो, from A to B to C to D, every time the number of carbon atom is getting increased. जैसे जैसे ये चिलेटिंग लिगैंड का साइज इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे ये जो एम्बिडेंटेड लिगैंड है उसमें सल्फर कोऑर्डिनेटेड होगा या नाइट्रोजन कोऑर्डिनेटेड होगा, वो डिटरमाइंड होते जाते हैं बाय द स्टेरिक इफेक्ट. एंड हाउ इज इट सो? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. In the case A, what is happening? You are having only one number. In the case A, you are having one carbon atom. एक ही carbon atom है, मतलब it is less steric. So this complex is less steric, less bulky, chelating ligand. ठीक है. As a result of which you can see that SCN में, so what were the ligands we were taking? Ambidented ligand, we are having two donor sites. One is a sulfur, which is a pi back bonding, and which results in pi back bonding with the metal, and the nitrogen, which is a नॉन पाई बैक बॉन्डिंग. बट यहाँ पे जब स्टेरिक इफेक्ट कर रहे हैं वहां पे हमें एक फैक्टर ध्यान रखना है. सल्फर जो है इसका लार्ज इन साइज एंड नाइट्रोजन जो है दिस इज स्मॉल इन साइज.
ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जब आपका अभी तक कार्बन एटम एक ही है, अभी भी आपका इतना ज्यादा बिग नहीं हुआ है, देन दिस कार्बन एटम कैन एक्चुअली अलाउ द बिगर एटम्स, व्हाट एटम्स, द बिगर सल्फर एटम to get bonded or to get coordinate to the metal. So in the case A, both the sulfur atoms are allowed to occupy both the positions because only one carbon atom is there in the chelating ligand. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को भूल जाएंगे और हम सिर्फ स्टेरिक इफेक्ट को ही ध्यान में रखेंगे। ना धीरे धीरे मैंने इन द केस बी मैंने कार्बन एटम को इंक्रीज कर दिया है। जब मैंने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंक्रीज कर दिया है, वहां पे आप देखो क्या हो गया, तो सल्फर का साइज तो बिग है, तो वहां पे ये बल्कि सल्फर को, दोनों ही बल्कि सल्फर को अलाउ नहीं कर पा रहे थे to occupy, space कम हो गया to occupy this position. That is why in the case B only one site is occupied by the sulfur, whereas the other site is now replaced, the other site is now replaced by the smaller nitrogen. So now since हमारा कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो गया, तो अब क्या हो गया, एक सल्फर को हम अभी तक अलाउ कर पा रहे थे, अभी तक हमारे पास रूम है, स्पेस है, बट अभी हमारा दूसरा सल्फर एटम रिप्लेस हो गया बाय द स्मॉलर नाइट्रोजन. सो दिस इज द स्मॉलर नाइट्रोजन एटम of the ambidented HCl- ligand. तो धीरे धीरे मैं क्या कर रही हूँ, मुझे और इस चीज को प्रूव करना है. मैंने अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैंने 3 कर दिया हुआ है. नाउ आई एम टेकिंग 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अब क्या होगा, अब देखो, अब इसके वजह से क्या हो गया कि आपका स्पेस और कम हो गया. दिस इज एनफ, दिस इज वेरी स्टेरिकली hindered. Okay, so this is very much sterically most bulky ligand, most bulky ligand, as a result of which अभी आपका स्पेस काफी हद तक कम हो गया है. So that is why with the increase of the number of carbon atoms in the chelating ligand, both the positions now are occupied by the smaller nitrogen. Now both the positions, both the sulfur atoms are now replaced, bulky sulfur atoms are now replaced by the smaller nitrogen. You can clearly see this is happening due to the steric factor. Now both of them अभी इतना ज़्यादा बल्कि हो गया, अभी रूम ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है to this. So that is why now both the sulfur atoms are now replaced by the nitrogen atom due to the increase in the size of the chelating ligand. ठीक है, due to the steric factor. इस चीज को और कॉन्फिडेंटली प्रूव करने के लिए यहाँ पे क्या किए गए हैं. Now this phosphorus atom you see, phosphorus atom is a pi acceptor ligand. ठीक है, सो दैट इज वाई फॉस्फोरस एटम को आप सोचते हो, ठीक है, अगर फॉस्फोरस एटम है तो मैंने क्या किया, फॉस्फोरस एटम को मैंने एक स्मॉलर एटम जो है दैट इज अ नाइट्रोजन एटम से रिप्लेस कर दिया, एंड दिस नाइट्रोजन एटम इज अ नॉन पाई एक्सेप्टर लिगैंड टू सी कि यहाँ पे किसी भी रीजन की वजह से कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर काम करेगा. आंसर इज नो. इवन इफ मैंने फॉस्फोरस एटम को रिप्लेस कर दिया बाय नाइट्रोजन एटम, तो फिर भी नाउ हम यहाँ पे चेंजेस क्या कर रहे हैं, फॉस्फोरस एटम विच इज अ sigma donor pi acceptor ligand is replaced by a nitrogen atom which is a non pi acceptor ligand. तो as per the electronic effect इसके ऑपोजिट में सल्फर होना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक effect is not at all concluded. Electronic effect in this case is not at all concluded. That is why even though आपने नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया, फिर भी एज बिकॉज अभी साइज इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, चिलेटिंग लिगैंड इतना बल्कि हो गया, फिर भी स्पेस ही नहीं है. दैट इज वाई again both the positions are now occupied by the nitrogen atom of the ambidented HCl- ligand. Okay, I hope this is clear to you. So therefore you can see that in case D, if one of the phosphorus atom is replaced by a smaller non-pi
pi-back bonding nitrogen atom, rearrangement of one of the thiocyanate ligands occur. Significantly, it is the group that is trans to the nitrogen atom that isomers. ठीक है? Even if you do this, then also you can see that only nitrogen atom ही होगा, सल्फर एटम नहीं आएगा. मैंने कहा था सल्फर एटम हमेशा अपने ऑपोजिट में नॉन पाई एक्सेप्टर को प्रेफर करते हैं, बट साइज ही इतना बढ़ गया तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. स्टेरिक इफेक्ट में स्टेरिक इफेक्ट ही डोमिनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का कोई भी जगह नहीं है. दिस आई हैव ब्यूटिफुली गिवन इन अ नोट फॉर्म. वही मैंने कहा, जब आपका चिलेटिंग लिगैंड रहते हैं तब कौन सा फैक्टर कम्स इनटू प्ले? रिमेंबर स्टूडेंट्स, द स्टेरिक फैक्टर डोमिनेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर इज नॉट कंक्लूडेड. एंड ओवर केस ए में आपका क्या हो रहा था? नंबर ऑफ कार्बन एटम एक था. केस ए में नंबर ऑफ कार्बन एटम एक था. ठीक है, आई होप यू रिमेंबर. उस टाइम क्या हो रहा था? दोनों ही सल्फर एटम, बोथ द सल्फर एटम्स दे वर अलाउड टू ऑक्यूपाई. फिर धीरे धीरे हमने क्या कर दिया? केस बी में क्या हो गया? केस बी में हमने देखा दैट एक सल्फर एटम इज रिप्लेस्ड बाय अ स्मॉलर नाइट्रोजन एटम. नाउ केस सी जब हो रहा था, केस सी में हमने देखा दोनों ही सल्फर एटम, बिकॉज कार्बन जो है नंबर ऑफ इंक्रीज हो गया था. नाउ केस सी में क्या हो गया? इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया दैट अभी दोनों ही सल्फर एटम आर नाउ रिप्लेस्ड बाय द स्मॉलर नाइट्रोजन. इवन इफ केस डी में हमने देखा अगर कोई फॉस्फोरस एटम को हमने रिप्लेस कर दिया बाय द स्मॉलर नॉन पाई बॉन्डिंग नाइट्रोजन, देन ऑल्सो इसके ट्रांस ग्रुप में कौन रहेगा? नाइट्रोजन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट ही कम्स इनटू प्ले एंड डोमिनेट्स. ओके, सो देखो यही जो थ्योरीज मैंने पढ़ाया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एम्फोसिस करती हूँ स्टूडेंट्स को दैट आप थ्योरीज पढ़ाई करो. दैट इज व्हाट साइंस इज ऑल अबाउट. जो स्टूडेंट साइंस को अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो साइंस जरूर जानने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो कैपेबल एंड स्ट्रॉन्गर एंड सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको अच्छे से थ्योरीज पढ़ाया, नोट्स दिया, अब आप खुद आंसर कर पाओगे. ये अलग से मुझे आंसर करने की कोई जरूरत नहीं है. सी, दिस इज द क्वेश्चन विच एक्चुअली केम इन द CSIR NET December 2017. वहां पे बोला, कंसिडरिंग द एम्बिवेलेंट बिहेवियर ऑफ द thiocyanate ion, दैट इज द SCN माइनस लिगैंड. ठीक है, ऑफ द SCN माइनस, one second. Okay, thiocyanate ion, that is the SCN minus ligand, the most stable structure कौन सा होगा? So definitely यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया, जो 2 ऑप्शंस रूल आउट हो जाते हैं. पहले मैं करके देती हूँ. मैंने कहा जब रेस में रिकैपिचुलेट, कार्बन नंबर जब 2 था तब क्या था? उसमें एक सल्फर एटम था एक साइड में एंड दूसरा नाइट्रोजन था. वहां पे 1 सल्फर वाज रिप्लेस्ड बाय द अनदर स्मॉलर नाइट्रोजन एटम. तो इन दिस केस 3 and 4 में आपके पास कार्बन नंबर है 2, तो उसमें क्या हो जाएंगे? एक सल्फर होगा, एक नाइट्रोजन होगा. उन लोगों ने क्या दिया? उन लोगों ने इन द एग्जाम्पल नंबर 3 दोनों को ही सल्फर कर दिया या दोनों को ही नाइट्रोजन कर दिया. सो बोथ ऑफ देम आर इनकरेक्ट एंड बोथ ऑफ देम आर रूल्ड आउट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू 1 and 2. So this is number 2. I'm sorry. Okay, 1 and 2 में यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1. तो वहां पे मैंने क्या कहा था आप लोगों को? आई होप यू रिमेंबर, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होता है तब काफी स्पेस हो जाता है. एज पर द स्टेरिक फैक्टर और कंसिडरिंग द स्टेरिक फैक्टर, द बिगर सल्फर एटम, बोथ दोनों ही बोथ सल्फर एटम्स एक्चुअली गेट कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल. ठीक है, सो तो यू सी बोथ ऑफ देम. तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि दोनों नाइट्रोजन है. दैट इज वाई यू कैन अगेन रूल दिस, दोनों ही नाइट्रोजन आर गेटिंग बॉन्डेड टू दिस. अगेन यू कैन रूल इट आउट एंड देयरफॉर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. द आंसर इज 1. व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1, both the sulfur atoms are now getting bonded or coordinated to the metal, because now enough
spaces available, and considering the steric factor. And when is the steric factor considered? When the ligands are bulky and chelating, as because the number of carbon atom is less. So that is why answer 1 is the correct one. Okay, so I hope you like my video. If you like my video, do write them in the comment section. That encourages me and motivates me a lot to make more and more videos. And also do press the like button. And thank you for watching my video. Thank you, students.